ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज में आप सभी का स्वागत है बच्चों। ये अनसीन लीगल डिक्टेशन है। जैसे कि दूसरा जो चंडीगढ़ का फॉर्म निकला था, चंडीगढ़ स्पेशल हाई कोर्ट का, यानी कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट का, वो पहले दूसरे थे, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोर्ट के फॉर्म थे स्टेनो के। ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट का, इसकी जो डेट है 10 और 14 मार्च बता रहे हैं। 10 और 14 मार्च को इसका सीपीटी होगा। तो यानी कि फिर 1 महीने बाद ही रिजल्ट आ जाता है, तो मोटा मोटा मान के चलिए मई में आपका पेपर होगा। मैंने कहा था बरसात में आप नौकरी पे चढ़ जाओगे, तो वही बात आ गई, जुलाई अगस्त में ये ज्वाइनिंग दे देंगे। तो जिन बच्चों ने तैयारी की है, साहिल मेरे पास पढ़ता है लेकिन यहाँ आता नहीं। एक जैसे उसका क्या नाम था उस लड़के का, यहाँ बैठता था वो मैडम की रिश्तेदारी में से, हेमंत। हेमंत जो है बीटेक के चक्कर में है, तो अपना वहाँ उसके पेपर दे रहा है। तो हेमंत को ही मैं सलाह दूंगा, अब सीपीटी आ गया है, कम समय है, अब रट्टा मारना पड़ेगा। बढ़िया से रट्टा लगाइए और इन डिक्टेशनों को लिखिए, नहीं तो भैया नौकरी आएंगी चली जाएंगी, आप लोग दिखते रह जाओगे। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। The question for consideration is as to whether it is permissible for an employer to fill any subsequent vacancy caused over and above the number of vacancies advertised, and in case the number of vacancies advertised and in case the number of vacancies advertised stand filed, whether then selection process comes to an end and stands exhausted. Stop. In such an eventuality, there remains no sanctity to the wait list. Stop. As to whether it is permissible for the employer to fill up the future vacancies which came into existence subsequent to the conclusion of the selection process from the wait list so prepared. Stop. It is a settled legal proposition that authority cannot fill up vacancies over and above the number of vacancies advertised, as it would amount to filling up the vacancies which have occurred in future, and that would be violative of the fundamental rights of the candidates who became eligible subsequent to the advertisement, as held by the Honorable Supreme Court in Union of India and Organization versus Ishwar Chandra. Stop. The Honorable Supreme Court quashed the appointments made over and above the vacancies advertised, holding that such an action was neither permissible nor desirable for the reason that it would amount to improper exercise of power, and only in a rare and exceptional circumstance and in emergent situation this rule can be divided from, and it can be done only after adopting policy decision based on some rationale, as the authority cannot fill up more posts than advertised as a matter of course. Stop. The court further held that selected candidates have right to appointment only against vacancies notified, and that too during the life of the select list, as the panel of selected candidate cannot be valid for an indefinite period. Stop. Moreover, impaneled candidates in any even
cannot have a right against future vacancies. Stop. It has been further held that a person does not, on account of being empaneled, alone acquire any indefeasible right of appointment. Stop. Empanelment is at the best a condition of eligibility for the purposes of appointment, and by itself does not amount to selection, and nor does it create a vested right to be appointment, and by itself does not amount selection, and nor does it create a vested right to be appointed unless the relevant service rules provide to the contrary. Stop. In the said case, as the selection process was completed in 5 years after the publication of the advertisements, a contention was raised that the impaneled candidates deserved to be appointed over and above the vacancies notified. Stop. The Honorable Supreme Court rejected the contention, observing that it may not be justified, as offering the posts in such a manner would adversely prejudice the cause of those candidates who achieved eligibility in the meantime. Stop. In view of the above, the law can be summarized that appointments cannot be made over and above the number of vacancies advertised, as it would adversely affect and violate the fundamental rights of those who became eligible subsequent to the date of advertisement, in pursuance of which the select list is prepared. Stop. ये वर्ड कितने थे पहले देख लेते हैं. प्रांचल लिखी गई. कितने वर्ड छूटे हैं? 25-30 वर्ड छूटे हैं. 513 वर्ड थे. 5 मिनट 56 सेकंड. 56 सेकंड को करना 0.93. तो भैया जी 513 भाग में 5.93. ये स्पीड रही बच्चों 86.50. 86.50 यानी कि 80 का जो मैटर बोलेगा उसके लिए है, लेकिन वहाँ तो 100 भी बोलेगा, क्योंकि सीनियर वाला के लिए 100 बोलेगा. तो सीनियर के लिए भर रखा है तूने दीपक? भरना था ना भाई, इसमें तो CPT था और सीधा स्टेनो का टेस्ट था, ध्यान नहीं दिया आपने. तो मैं लगा रहा हूँ इंग्लिश अनसीन लीगल डिक्टेशन के नाम से नंबर 2. पहले इसको पढ़िए, रिकॉल करिए फटाक से. 25 वर्ड है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है. और फिर इसको टाइप कीजिए. फिर मैं बोलूँगा एक जनरल की अनसीन डिक्टेशन, उसको फिर कीजिए. उसके बाद फिर इसका फेंटा लगाइए. फेंटा लगाना समझ गए, यानी कि इतनी बार रगड़ देना है रबड़ी बन जाए. ठीक है, इस क्लास में इतना ही बच्चों. नमस्कार बच्चों. पारस शुक्ला कह रहा है कल की वर्ड वाली क्लास वेबसाइट पर क्यों नहीं आई? वेबसाइट पर उसका क्या आना था? डिक्टेशन बोलूंगा वो आएगी ना, है ना? ओके.